Hello and welcome to DBMS tutorial. Today we will discuss about join and especially equijoin. Equijoin is also called as natural join. That is also called as natural join. That is symbol of equijoin. Equijoin is required when we fetch output of two different tables and output is only the मैच डेटा. हम किसी दो अलग अलग टेबल से आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें इक्विजॉइन का उपयोग करना होता है, इक्विजॉइन का यूज़ करना होता है. और इक्विजॉइन में केवल मैच डेटा को ही हम आउटपुट में दे सकते हैं. ठीक है. इक्विजॉइन का इन्वर्स होता है इन इक्विजॉइन, जिसमें अनमैच डेटा को हम आउटपुट में जनरेट करते हैं, उनको बोलते हैं इन इक्विजॉइन. सो हम अभी पढ़ रहे हैं इक्विजॉइन. इक्विजॉइन में दो अलग अलग टेबल का हम आउटपुट जनरेट करके उसको फैच करने की कोशिश करेंगे. सो वी आर हैविंग टू टेबल्स EMP एंड DEPT. EMP tables have 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns and department has 3 columns. In both table, department number column is common in both table. I want output from both tables that department number is matched. Like department number 1 name is Ishwar. Department number 2 name is Teshu. Department number 2 name is Rakesh. So I want to output fetch output from both the tables that only match data. So match data is 1 and 2. 4 is not matching and 3 is not matching in both tables. So I want to generate an output that both table output are matched. Only output only those data that are matched. So for we use equijoin. For that I will write a command. I will write a query. Equijoin query. Select DEPT. Select dname, comma, ename. Select dname and ename from. We are using both tables, so from EMP, comma, DEPT. Select dname and ename from EMP and DEPT. Where EMP dot department number is equals to DEPT dot department number. DEPT dot department. So this is an example of equijoin. The output will be matched data from EMP and DEPT whose department number are matched. Where EMP dot department number, EMP table का department number और DEPT dot department number मतलब department table का department number दोनों जहाँ पे मैच होगा, ये दोनों कॉलम जहाँ पे मैच होंगे उनको हमको आउटपुट शो करना है. आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट विल बी सेलेक्ट डीनेम एंड ईनेम लिखें, इसलिए यहाँ पे डीनेम एंड ईनेम. मैच डेटा कौन से है? 1. मैच कौन कौन सा होगा? दैट इज 1 एंड 1. सो 1 का डीनेम क्या है? 1 का डीनेम क्या है? CSE. 1 का डीनेम है CSE. So output will be CSE. और 1 का ename क्या है? ईश्वर. So output will be ईश्वर. Then second match data is 2 and here also 2. 2 is available in both table,
department table, and tools D name is IT, so D name will be IT, and tools E name is TESU, so output will be TESU. Next, that is 2, and available data is 2. It is 2 and available data is 2. Tools D name is IT and E name is Rakesh. So the output is fetched from both the tables. The D name is from department table and E name is from EMP table. So output is from both the tables, that department numbers are matched. Unmatched data are not will be output, like 4 and 3 is not output because 4 and 3 are not matched in both the tables. So this is a simple example of equijoin. Thank you.